Hi students, welcome at KitCan Digital Learning. I am your English teacher. Today I am presenting you lecture number 7 and our topic is For a Better Life from your book We Learn English Class 7 published by Oxford University Press. Before starting our today's topic, I would like to advise you a few tips for effective learning and takes maximum benefit from KitCan Digital Learning. Like and subscribe your school channel so you will not miss any video. Carefully listen and watch video from start to end. Find out the answer of the question from the video. You have to watch the video multiple times until you have find the answer. It was before 1865 that doctors had the advantage of using antiseptics. ये फ़ायदा सिर्फ 1865 से पहले था कि डॉक्टर उस वक्त में डॉक्टर्स जो हैं वो एंटीसेप्टिक्स यूज़ कर सकते थे एंटीसेप्टिक्स मींस जरासीम से पाक. Joseph Lister, a surgeon in London, studied keenly the findings of Louis Pasteur, a French doctor. Pasteur had made a significant finding that putrefaction or rotting was the result of live bacteria entering a wound and not by any remedy applied by a doctor as believed earlier. यानी कि जो ज़ख़म वगैरह होते हैं उनके ऊपर जो बैक्टीरिया एंटर हो जाते हैं उस पे कोई रेमेडी अप्लाई नहीं की जाती थी जिसकी वजह से ये सारी बीमारियां होती थी. ऐसा माना जाता था पहले. लिस्टर फर्दर प्रूव दैट बैक्टीरिया कुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग अ वाउंड एंड पॉइजनिंग इट. पहले आगे जाके जो ये पता चला कि बैक्टीरिया जो है वो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है किसी भी ज़ख़म के अंदर घुसने से और उसे जहरीला करने से. ही एक्सपेरिमेंटेड विद एन ओपन फ्रैक्चर. उसने एक ओपन फ्रैक्चर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया. इन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर द स्किन इज़ ब्रोकन दस एक्सपोजिंग द इंजर्ड एरिया टू जर्म्स एंड बैक्टीरिया. उसने एक्सपेरिमेंट किया एक ओपन फ्रैक्चर पे और ऐसे टाइप का फ्रैक्चर इसमें स्किन जो है वो ब्रोकन थी ताकि स्किन का वसा जो है वो जरासीम को एक्सपोज हो सके बैक्टीरियाज को. द वाउंड वॉज कवर्ड विद कार्बोलिक एसिड टू प्रिवेंट जर्म्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंटरिंग इट. जो ज़ख़म था उसको जो है कार्बोलिक एसिड उसके ऊपर लगाया गया था ताकि एटमॉस्फेयर के जो जर्म्स हैं उनको उसमें एंटर होने से रोक दिया जाए. द बैक्टीरिया वर सक्सेसफुली डिस्ट्रॉयड बिफोर एंटरिंग द अफेक्टेड एरिया क्लेम्ड बाय द सर्जन. सर्जन ने कहा था कि बैक्टीरिया जो है वो उस वाउंडेड एरिया के अंदर पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो गए थे, तबाह हो गए थे. थैंक्स टू दिस डिस्कवरी सर्जिकल प्रोसीजर्स हैव एडवांस टू द considerable degree. Various kinds of antiseptics from external applications to mouthwash are used टू कॉम्बैट बैक्टीरिया. यानी कि आज डिफरेंट टाइप के एंटीसेप्टिक्स यूज़ होते हैं जो बाहर एक्सटर्नल यानी कि एक्सटर्नल बॉडी में भी अप्लाई किए जा सकते हैं और माउथ वॉश यानी कि मुंह के अंदर भी अप्लाई किए जा सकते हैं ताकि बैक्टीरिया को जो है वो मारा जा सके. कैन यू थिंक ऑफ डिफरेंट यूजेस ऑफ एंटीसेप्टिक्स इन आवर डेली लाइफ? Hope you enjoyed and learned basic concept of today's topic. Don't forget to answer the question and write the answer of this question in your summer vacation copy or journal within 24 hours to maintain your summer vacation learning project marks, as total marks of this question will be added in your final term exams based on your reply of all questions. The marks of these questions are 10. Hope to see you in the next topic and learn more new concepts. Thank you. Bye bye.